आपकी मुन्नी हो, क्या नाम है उनका? अंतिमा, अंकिता। अंकिता, कल सुबह के पहले मशीन चलाओगे आप लोग आधा आधा घंटा। देखो आप ऑन है। फिर सब कुछ मैसेज आ रहा है, ऑफ करो। चौथा स्टेप है ना, चौथा स्टेप क्या करो? फर्स्ट की वाला छोटे छोटे स्टेप दे दीजिए बताने के लिए, जैसे आपके अंदर खुल जाएगा, बस बताने के लिए कर दीजिए छोटा सा, आपके अंदर में खुल जाएगा। इसको भी ऑर्गेनाइज करना है। स्किन कैसे यहाँ का तो होना चाहिए। कितना मिनट ये करना है? 5 मिनट।
सर्कुलर मूवमेंट में सबसे ज़्यादा नाक पे करना है। सर्कुलर मूवमेंट वाला है। ले ले भरते मेरा ये इसको देखिए, इस पे देखो कैसे हो रहा है। जैसे उस बार बोल रही थी वैसे बोल रही थी, उस टाइम बोल के बताई थी। नीचे से लेकर जाना है इसको ऐसे ऊपर की तरफ, और उसके बाद से गोल गोल इसको घुमाना है। मसाज का स्टेप देना है पूरे आइज पे। पूरे आइज पे। पहला स्टेप से मूवमेंट हो जाएगा, समझी? हाँ नाक में नहीं जाना चाहिए। जो तुम यहाँ पे कर रही हो आपके पास, देखो कैसे कर रहे हो, सही में रहना होगा। उसके बाद से ऐसे करना है, पूरे आँख पे गोल गोल घुमा के मसाज करना। तुम इसको ऐसे घुमा दे रहे हो जैसे आँख में पूरे जैसे हम लोग फेशियल स्टेप में यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो पूरे फेस में ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है, वैसे ही हम लोग आईज मसाज में यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो पूरे आईज एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, डार्क सर्कल, रिंकल्स, फाइन लाइन जो आती है एजिंग, उसको कंट्रोल करेगा। सही है। और ऐसे में जैसे कभी तो यहाँ जाएगा, यहाँ पर खींचते हुए यहाँ आएंगे कम से भिंडी के पास पहले दबाना, फिर इधर आलू को खींचते हुए यहाँ लेते हैं, यहाँ पर ये चिकबोन था ना, इसको ये नीचे यहाँ पर यहाँ पे आपको फील हो रहा है ना दर्द से कुछ 3-4 जगह। थोड़ा कम क्लास कर
अभी हुआ ठीक है अभी इस तरह उस तरफ है ना